शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। आज बाप दादा हम बच्चों को महादानी बनने की युक्ति बताते हैं। Today Bab Dada is explaining about becoming great donor. महादानी We all Baba's children have to become a great donor. करना धन पदार्थ ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। The worldly people also become donors, but it isn't a big thing. Baba says, sweet children, तुम तो खुद ही मेरे ऊपर बलि चढ़ जाते हैं। you surrender yourself to me. विश्व कल्याण के लिए तन मन धन You surrender your body, mind and wealth अर्पण करके महादानी on God's service. You surrender everything to God, प्राप्ति भी इतनी बड़ी होती है। and you will also attain a very big attainments. You receive the inheritance of the kingdom. बाबा ने आज विशेष बच्चों को बड़ा अच्छा एक जवाब दिया हुआ है। Today Baba has given a very good reply. बाबा परम धाम से रोज हम बच्चों को पढ़ाने के लिए Every day Baba comes from the Supreme Abode to teach us children. पैसा नहीं लेते। He doesn't take money from us. कितने बरस He makes such a great effort, तो बच्चों ने कितना रुचि से पढ़ना चाहिए, and therefore you children have to कितना ध्यान से पढ़ना। study the study with a lot of interest, with a lot of intoxication. ये बताना है कि बाबा आप पढ़ाते रहो, हम पढ़ते रहे। You have to tell Baba that Baba, we will continue to study from you. अटेंशन से पढ़ेंगे। We will pay attention. We will imbibe very well. बाबा से प्रश्न पूछते, बाबा कब तक पढ़ना है? And some children, they ask question to Baba, Baba, until when we have to study? सुनेंगे हम बाबा How long we have to study? So we will listen to Baba's reply from today's Murli. बाबा कहते मीठे बच्चे, Baba says, sweet children, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत। God's directions are the most elevated directions. तो उसकी मत भी श्रेष्ठ है। God's directions are the most elevated directions, and by following them, you become a real gold. All other directions make you false. ही श्रीमत है। You become a real gold only by following Baba's Srimad. All other directions make you false. सागर में भरा है Question: जो किसी भी मन what part is recorded in the One Father, the ocean of knowledge, a part that is not in any human soul? Even Brahma, Vishnu and Shankar do not play that part. So what part is recorded in the One Father? मुझ आत्मा में भक्तों की Answer: करने का Baba says, सबको सुख देने the part that I, this soul, have recorded in me is of looking after the devotees को भक्त वत्सल and of giving happiness to everyone, मैं ज्ञान का सागर बाप also called as the Bhakta Vatsalam. बच्चों पर अविनाशी Baba says, I, the Father, the ocean of knowledge, shower imperishable knowledge on everyone. ही नहीं कर सकते। No one can put a value on these jewels of knowledge. हमारा जीवन मूल्यवान बन जाता है बाबा। Our life becomes invaluable. मैं लिबरेटर हूँ I, the liberator, बन के become the spiritual guide आत्माओं को वापस शांति धाम में ले and take you souls back to the land of peace. सब मेरा ही पाठ है। All of this is in my part. आवे परम Only Baba is having all this part. मेरा ही पाठ है। Baba says, all of this is in my part. करता हूँ I first liberate you, साथ में लेके then I become your guide and take you along with me. नहीं देता। I don't cause sorrow for anyone. इसीलिए सब मुझे आँखों के And this is why everyone places me on their eyes. ऊपर को आँखों पर रखते हैं। जब माला सिमरते हैं ना तो लास्ट When they turn the bead of the rosary, को आँखों पर रखा जाता when they get the flower in the rosary,
they place that on their eyes. अभी दुख हरता सुख हरता दुख Baba is the redeemer of sorrow and bestower of happiness. भगत क्या And this is why everyone places Shiv Baba on their eyes. हे भगवान तू बड़ा निर्दयी है तूने हमको दुख दे दिया But some worldly people, they say, you're merciless. They speak this to God. ऊपर क्यों रखे If the Father would give sorrow, why would they place the beads on their eyes? Ravan, your enemy, causes sorrow, सारा बरस मनुष्य and this is why people burn effigies of him. बरस में एक बारी मनुष्य जला गीत है Song. जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान The shower of knowledge is for those who are with the beloved. Om Shanti. बाप ने ओम का अर्थ तो बच्चों The Father has explained the meaning of Om to you children. अर्थात हम आत्मा Om means I, the soul. अर्थ देखो That's all. छोटा है The meaning is so short. ऐसे नहीं कि आई एम गॉड It isn't I am God. पंडितों आदि से पूछेंगे If you ask Pandits what the meaning of Om is, तो वो बहुत लंबा they would give a long, complicated meaning, नहीं सुनाई and they wouldn't even give you an accurate meaning. यथार्थ Accurate and सत्य inaccurate, true and untrue. तो है ये एक बाप Only the one Father is the truth. बाकी इस समय तो है इस असत्य However, at this time it is the kingdom of falsehood. राज को सत्य का राज कहा The kingdom of Rama is called the kingdom of truth. सत्यता का राज कहे The kingdom of Ravan is called the kingdom of falsehood. काया झूठी माया The body is false, सब कुछ झूठा the world is false, भी झूठी है शरीर भी everything is false. भी झूठा वो अयथार्थ सुनाते हैं असत्यता है Everything they tell you is inaccurate. The Father is the truth. तो वो सब सत्य सुना करके सत्य Everything He tells you is truthful and makes you into real gold. सत्य को जान लिया कि हमको We have known what the truth is, को याद करना and therefore we have begun to remember Him. फिर माया सत्य बनाती Then Maya makes you false. माया की प्रवेशता के Because of the interference of Maya, कहेंगे whatever people say is false, को आसुरी मत कहा and they are called devilish directions. है ईश्वरीय मत The Father's directions are God's directions. आसुरी मतें दुनिया में अनेक अनेक Those who follow devilish directions would only tell lies. There are innumerable devilish directions. There are also innumerable gurus. Their directions would not be called Srimad. हम श्रीमत Only the directions of God are Srimad. सबसे श्रेष्ठ तो है ही परम पिता परमात्मा Only the directions of God are Srimad. ऊंचे ते ऊंचे है You children now understand that you are becoming elevated by following Srimad. The most elevated of all is the Supreme Father, the Supreme Soul, who also resides in the most elevated place of all. याद करते हैं All devotees remember Him. का काम करेंगे तो कहते हैं भगवान इसको सुमति दो All devotees remember Him, and they also say that this one should be given a good intellect. श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हो फिर वहाँ भगवान कह करके Devotees remember Srimad, and so they must definitely be following devilish directions. देता है You are now becoming elevated by following Srimad. So there is no need to remember God there. Deities don't have any sorrow that they would have to remember God. दुख है Devotees have limitless sorrow. पहाड़ गिरने वाले Now mountains of sorrow are yet to fall. महाभारी लड़ाई ये दुखों के पहाड़ हैं The great war is the mountain of sorrow for human beings, के लिए फिर सुख के पहाड़ whereas it is a mountain of happiness for you children.
After sorrow, there will definitely be happiness. क्योंकि जब तक दुख के पहाड़ नहीं गिरेंगे Until the mountains of sorrow doesn't fall, from where the new world will come. बाद फिर तुम्हारा राज After this destruction, there will be your kingdom. विनाश होता है Innumerable religions will be destroyed, हो गया and the religion that has now disappeared will be established. इस महाभारी लड़ाई के द्वारा स्वर्ग के It means the gates of heaven will open through this great war. Who will pass through these gates? बाबा पूछता है Baba is asking, who will pass through these gates? सीखते हैं Those who study Raj Yoga. सिखलाने वाला है बाप It is the Father who is teaching you. के साथ है उसके लिए This shower of knowledge is for those who are with the beloved. पिया बाप को कहा जाता The Father is called the beloved. है वर्षा तो पानी के सागर से निकलती Those showers emerge from the oceans of water. से निकलती हैं ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की This is the shower of the imperishable jewels of knowledge. होता है वो वर्षा थोड़ी गिराता है Those showers emerge from oceans of water. This is the shower of the imperishable jewels of knowledge. उनके लिए अविनाशी There is the shower of the imperishable jewels of knowledge for those who are with the beloved, the ocean of knowledge. रूपी झोली में धारणा हो You imbibe these imperishable jewels of knowledge with the aprons of your intellects. आत्मा Education is imbibed by the intellect. तो जैसे कि आप Souls have minds and intellects, ग्रहण करते and so it is as though souls imbibe everything. जैसे आत्मा को ये शरीर है Just as a soul has a body, in the same way, a soul has a mind and an intellect. मन बुद्धि बुद्धि में ग्रहण करती ज्ञान को परंतु ये ज्ञान ग्रहण कब होता है वो बाबा बताते The soul imbibes the हैं तब होता है knowledge with the intellect. He can only imbibe this when there is yoga. होगा योग तब लगता है जब पवित्र बने Yoga will be connected only when you become pure. लगता है योग Only on the basis of purity you will connect yourself to God. बैठ के बहुत सहज The Father sits here and explains very easy things. मनुष्यों ने तो बहुत डिफिकल्ट Human beings have related many difficult things. में तो बहुत मत There are many opinions in the scriptures. का कितना प्रचार करते The knowledge of the Gita has spread everywhere. हैं भी बहुत करते Many people extract meanings from it. हैं अनेक गीताएं बना They have created so many different Gitas. शास्त्र नहीं जिसके लिए कहे फलाने का There are no other scriptures of which they would say, the scripture of so and so, the Vedas of so and so. For the Gita, they say गीता के लिए कहते हैं ये गांधी की the Gandhi Gita, the Tagore Gita, the Gyaneshwar Gita, the Ashtavakra Gita. बहुत नाम गीता के They have given many titles to the Gita. के लिए कभी इतने नाम सुने नहीं You would never hear so many titles for the Vedas or other scriptures. However, people don't understand anything at all. This knowledge disappears. स्वराज जो है वो है कहाँ So, where do you receive the deity sovereignty from? करने वाला होगा वही तो Surely it would be the one who establishes heaven who gives it to you. तुम बच्चों को स्वर्ग The Father has now come to give you children the kingdom of heaven, देता है and that too is for 21 births. हमारी वो जो 21 कुल का It is remembered that a Kumari is one who uplifts 21 clans. सब कुमार और कुमारियाँ Now, who is that Kumari? कोई को भी All of you are Kumars and Kumaris. By following Srimad or the Father's directions, you can enable anyone to attain the fortune of the kingdom for 21 births. All Kumars and Kumaris are Brahma Kumars and Brahma Kumaris. All are Brahma Kumars and Brahma Kumaris. सब कुमार कुमारियाँ हो All Baba's children are Kumars and Kumaris
who attain the fortune of the kingdom for 21 कैसे births. कराते हो? बाप की मत से। पाठशाला में जो पढ़ते हैं वो जानते हैं Those who student study in हैं। a Pathshala, place of study, know that they are students. इसीलिए People at दुनिया के other दर्शन नहीं satsangs आएंगे। don't consider क्योंकि अपने themselves to student be से मतलब है, students. कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। Students कभी have कथा their aim and सुनी नहीं, objective सुनी in नहीं, their बात पर intellects. वही कथा चलती रहती है। स्टूडेंट को एम In ऑब्जेक्ट other बुद्धि में spiritual रहती है। gatherings, they don't have any तुम aim हो and ईश्वर के objective. स्टूडेंट, You are God's भगवान हो students. वारिस। मैं तुमको God राजयोग सिखाता speaks, I हूँ, अपने teach you क्रिया Raj दिलाते Yoga. हूँ। मनुष्य से देवता बनाता I हूँ, change you from human देवताओं की beings into राजधानी। deities. यथा राजधानी देवी There देवता used तथा to be the kingdom यथा of राजा रानी deities. तथा प्रजा। As were वैसे the king नारायण and बन queen, जाते the हैं। deities, ये एम ऑब्जेक्ट so were their subjects. ऐसे नहीं कि राजा राम They या changed रानी from सीता ordinary बनाते। humans into बाबा राम सीता Narayan. नहीं बनाता, बाबा लक्ष्मी नारायण बनाते। This aim and objective is वंश नंबर बनाता first. है, पर बनने It वाले isn't that he would अपने आप create बन जाते हैं। King Rama or Queen ये है Sita. राजयोग। This is Raj Yoga. राजाओं का राजा बनाएगा। And so he would make you into kings of kings. गवाया हुआ I come every cycle once again तुम्हारा to give you राजयोग back the मनुष्य ने kingdom नहीं you छीना है, lost. छीना है It माया। wasn't a human being who snatched your kingdom away. माया के ऊपर It was पानी। Maya who snatched वो it लड़ाई away. होती है And राजाओं so you now have to conquer Maya. यहाँ तुम माया के साथ युद्ध करके उसके ऊपर विजय प्राप्त करो। Here you have to conquer Maya. एक दो के ऊपर जीत पाने के लिए Those are wars between kings where they fight to conquer one another. राज हो गया है। It has now become the rule of people over people. अनेक लड़ाइयाँ There have been innumerable wars of limited kings. एक दो से राज लेने के लिए कितने झगड़ते। We learn everything in the history how they fight with one another in order to claim their kingdom. बल से तुम विश्व की And they have taken limited kingdoms through those. ऐसा तो कोई However, with this power of yoga, you establish the kingdom of the world. लड़ाई कहा जाता This is called the non-violent war. है, अथवा मरने मारने की बात नहीं। This war doesn't mean that you kill or are killed, लड़ाई में मरना मारना होता है। यहाँ because this is the power of yoga. देखो कितना सहज। This is so easy. बाबा के साथ योग लगाने से हम By having yoga with Baba, we become conquerors of sinful action. Maya cannot then attack us. खेल बताते हैं ना, They perform a play about Hath Mathai, तो माया को where a bead is put in his mouth and Maya then disappears. अल्लाह अल्लाह दिन का खेल भी बता। Then when the bead is removed, Maya would come back. There is also a play of Allah Avaldeen. स्वर्ग तो When he knocked on something, heaven would emerge. माँ के द्वारा That is heaven. Therefore, the Father sits here and establishes heaven through Brahma. वो कहते हैं ना ये नरक भी भगवान The Supreme Father, the Supreme Soul, would not establish hell. बनाया, पर समय Baba says, I don't create hell, I create heaven. बाबा कहता है ऐसा होता Baba says, if it were like that, they would create his effigy. बनाता ना If Baba would created hell, they would create his effigy. क्योंकि रावण सब However, they make an effigy of Ravan because he is everyone's enemy. उसको तो The Father who establishes heaven has to be placed on your eyes. करते हैं कि आके दुख से छुड़ाओ, The Father says, लिबरेट कर devotees remember and call me to come and liberate them from sorrow, and that is why I come and liberate them. है अपने The Father is the liberator and also the spiritual guide. He takes you back to your land of peace. साथ There is the shower of the imperishable jewels of knowledge on those who are with the beloved. बाबा है ज्ञान का साथ। No value can be placed on these jewels of knowledge. Baba is the ocean of knowledge, and so that part is definitely recorded in that soul. मेरी जो आत्मा है जिसको तुम The Supreme Father, the Supreme Soul Himself says, there is also a part recorded in my soul.
whom you call God, of looking after devotees and giving happiness to everyone. को अल्पकाल के लिए It is Maya who causes everyone's sorrow. भक्तों को अल्पकाल का It सुख is भी मैं देता हूँ, also in my power to give devotees temporary happiness. बाप का देव। Our Baba is having such a wonderful part. और दिव्य बुद्धि भी Baba says, I alone give them visions ज्ञान का and give them divine intellects. This is called the third eye of knowledge, जिससे तुम्हारी बुद्धि का गोदरेज का ताला with which the Godrej locks on your intellects open, जिससे बुद्धि का गोदरेज का ताला खुल जाता है। with which the Godrej locks on your intellects open. I too have a part. आपके साथ है उनके लिए ज्ञान की There is the shower of knowledge on those who are with the Father. अब इतने सब बच्चे कैसे साथ में Now, how could so many children remain with him? उनके लिए ज्ञान की बरसात बरसात तो चारों तरफ गिरती There is the shower of knowledge on those who are with the Father. Shower will be everywhere. करते रहेंगे तो If you continue to remember the Father, it means you are with him. कोई काम है Some may be in London and others somewhere else. कि मुरली जाती So there isn't his company physically. होती है ना, The Murli goes to them too. अच्छी रीत समझ ले वे Those who are wise and sensible will understand everything very well in 1 week. ताकत है भगवान में। एक हफ्ता भी अगर अच्छा समझ लिया तो सुदर्शन चक्रधारी बना दे। The one who will understand Baba's knowledge even in 1 week, बरसाते हैं। they are very wise and sensible. 84 जन्मों के सुदर्शन चक्र का राज अभी तुम बच्चों I then make them into spinners of the discus of self-realization. से माया You children have now understood the secret of 84 births. अर्थात By spinning this discus of self-realization, you cut off the head of Maya Ravan. That is, you conquer him. However, there is no question of cutting off anyone's head. वास्तव में शंख People have then shown weapons for violence. तो शंख ये जो है ये मुख्य In fact, your mouths are the conch shell, and to spin the discus is something for your intellects to do. और चक्कर फिराना ये क्या हो गया, बुद्धि का काम हो गया, बुद्धि से चक्कर फिरा। तो ये अलंकार भक्ति मार्ग में बोध दे दिए। शास्त्र आदि जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, ड्रामा So they have given many such ornaments on the path of devotion. All the same scriptures that continue on the path of devotion, according to the drama, will emerge. हो सकता है ये सच्ची गीता भी कोई ना कोई के हाथ में It is possible that when this true Gita falls into someone's hands, he will extract something from here and put it in the other one. हुआ किसी के हाथ में तभी तो डाला हूँ। बाकी सब वही लिखेंगे जो भी है वही निकलेगा जो भक्ति मार्ग की सामग्री है। कोई कोई अक्षर उनमें यहाँ के भी है। They use all the paraphernalias on the path of devotion. राजयोग भी ठीक है। बाप कहते हैं However, all of that will be the same. Some of the words from here have been mentioned in that Gita. God speaks is correct. Raj Yoga is also correct. लोभ है कहता है तुमको वो। The Father says you now have to return home. जिनमें लोभ है हाथ ऊपर करो। The one who have greed, raise your hand. बाबा यहाँ तो बहुत थोड़ों में लोभ है। Baba, very few people here in the gathering have greed. तुम्हारे में What greed you have? तुम्हारे में What greed you have? तुमको बहुत लोभ है, परंतु इसको शुद्ध लोभ कहा जाता है। सुना कौन सा लोभ है? इससे भारत सारा शुद्ध बन You have a lot of greed for that, but that is called pure greed. इतना लोभ है इसीलिए तो भाग भाग के आए हो। You all have come running here in order to take the jewels of knowledge from Baba, and therefore you have pure greed. When I asked you to raise your hand,
whether you have greed, you didn't lift your hand. सब लोग But now you understood you have pure greed. इधर वालों को तो इतना लोभ है यहाँ छोड़ते ही नहीं इधर ही बैठते आके हाँ The one who are residing here, they have so much of greed, they don't leave this place and go. बाबा कहता है तुम्हारे को वो शुभ लोभ है तुम Baba says you have इससे pure भारत सारा greed. शुद्ध बन जाता है The whole of Bharat becomes pure through that. गवर्नमेंट हो The people of Bharat want there to be the kingdom of Rama, where there is one government, one nation, unity, and one undivided direction. बिगड़ सब Undivided means deities. The other is devilish directions. Everything apart from Srimad is a devilish direction, and they continue to fight and quarrel with one another because of it. तो माता पिता कहते हैं क्या तुम्हारा माँ बाप नहीं है क्या If any children they fight one another, सतयुग में they will be asked as whether your parents are not living. आपस में नहीं लड़ते Because of not being God's children, they have become orphans. सतयुग में है सबको बेहद का In the golden age, the deities belong to the Lord and Master. हम बाप से ईश्वरीय जन्म से There, even animals never fight. भगवान से Here, everyone continues to fight and quarrel. ईश्वर In the golden age, everyone has unlimited happiness. हमारा You children know that you are now claiming your godly birthright from the Father. कल पाता हूँ God is personally in front of you. He says, I come every cycle to establish heaven. I bring a wonderful gift for you children. मेरे लाडले सिक्की लदे बच्चों The Father says, My beloved, long lost and now found children, you have come and met me after 5,000 years. वापर से लेके चिल्ला चिल्ला के थक गए Since the copper age, we have been calling out to the Father. We became very tired of calling out to Him. ऐसे और कोई कह सकता है बाबा पूछता है No one else can say this. कह सकता है कौन कहेगा ऐसे? भला देखो कोई कहना चाहिए ऐसा कोई कह सकता है भल अपने को ब्रह्मा विष्णु या शंकर कहलावे Although they may call themselves Brahma, Vishnu or Shankar, none of them would know how to say these things. करनी कुछ भी कहलावे अपने Nobody knows how to speak like Baba. इसमें कोई भी कॉपी नहीं कर सकता No one can copy Baba in this. जरा ज्यादा प्यार कर रहा बाप कहता है मेरे लाडले सिकी लदे The Father says, 5,000 My beloved, long lost and now found children, सिर्फ only you have come and met me again after 5,000 years. बहुत बच्चे मिलते रहते हैं Many children will continue to come and meet me. लगती है और राजा रानी It takes a lot of effort to establish a kingdom. भारत में प्रिंस There would be one king and queen, and there will be their children. प्रजा 40-50 They will continue to grow in number. मंजिल तो बहुत There will be so many princes and princesses. तो थोड़ी There must be at least 1 or 200,000, and there would be 4 or 5 million subjects. की कॉलेज है So the destination is very high. This is the Father's college, की कॉलेज है तो अच्छा पढ़ो ना फिर and so you should make such good effort. कहेगा राजाओं का राजा बनो ना कि प्रजा बनो The Father tells you to become kings of kings, तो क्या फायदा not subjects. बनेंगे वही जो कल पहले बने होंगे हम तो साक्षी होके देखेंगे कि कौन किस प्रकार Those who became this in the previous cycle will become this again. एकदम पकड़ लेते हैं We will watch as detached observers and see what inheritance each one will claim. दुनिया खींच कर Some will understand this very well. में फिर कट The Father is the most beloved. Needles are pulled by a magnet. के कम होते हैं नजदीक Some are more rusty than others. तो झट खींची जाएगी बाप A clear, clean needle will attract the magnet. बाप कट को निकाल Those who are close will come and meet Baba very closely. साथ ही रहेंगे A clean needle will quickly be pulled. परम धाम में एकदम उसको चिपक गई The Father removes the rust from you souls and makes you sparkle in such a way
that you can then live with him there. गायन भी है परंतु You are जानते to be नहीं threaded in the हैं कि rosary ये of माला Rudra. किसकी बनी हुई This है। is remembered, but no one knows बाप कहते हैं whose rosary is मेरी माला जो created. होगी The वो Father स्वर्ग के says, मालिक those who are part of my मेरी माला वाला rosary स्वर्ग के will मालिक। become the masters of heaven. भगत माला को भी तुम समझ गए। You have also understood the वो rosary of रावण की माला है। devotees. That is इसकी the माला नहीं rosary है of भगत माला। Ravan. याद इसको करते और रावण के गले में पिरोई जाएगी। Who कहते comes in the दूसरी rosary of Ravan first? पहले रावण की माला में कौन आता है? बताओ कौन आता है पहले रावण की Who माला? comes in the rosary of Ravan first? नहीं बताते हैं। पूज्य से पुजारी कौन बनता है? हम बनते हैं। अभी बोलते हैं हम बनते हैं। तो रावण की माला में भी Who पहले हम becomes बनते a हैं ना। worshipper from being worthy of फिर बाप की worship? माला में आते Those who are worthy of हैं। आप worship एक deities देवता फिर then पुजारी become बनते हैं। worshippers. देखो ये कितनी गुह्य समझने These की are बात है। such deep matters and बाप have की to be माला बनते हो understood. और फिर क्या करते हो? रावण की माला बन जाते हो। We तो have to अमर से become the काम भी bead of पहले the rosary बुद्धि मार्ग around पर Baba's चलते हैं। neck. तुम्हारे जैसा महादानी देह सहित सब कुछ बाबा You को are अपने ऊपर बलि चढ़ा philanthropist. देना। You सन्यासी sacrifice महादानी everything नहीं बन including सकते। your bodies to वो Baba. तो घर बार छोड़ के जंगल में Sannyasis चले do not जाते become हैं और तुम philanthropists. सब कुछ They ईश्वर के renounce अर्पण their कर homes डालते and हो। families and go away एवरीथिंग into the फॉर गॉड forest. फादर और You किसी को surrender नहीं। बाप को everything ही to सब कुछ God, बाप के ही अर्पण करते हो। everything for God चेक the करना सब Father. अपने को। You have to ये सब check कुछ बाप के yourselves अर्पण करते हो। whether you have surrendered everything to the किया है Father. बाप के अर्पण या नहीं किया है? Have you surrendered everything to the Father? अच्छा तुम बाप के अर्पण करते हो फिर क्या होता है? What तो then बाप फिर happens? कहता है मेरा सब कुछ तुम बच्चों को The दे Father दिया है। then says, everything जब of तुम mine is सब for कुछ you मेरे को दे children. देते हो तो When मैं you भी give तुमको सब कुछ दे everything देता to हूँ। me, I मेरा too जो give भी of कुछ है वो mine तुम्हारा everything है। to you. मनुष्य जब मरते हैं तो सब करनी घोर When को someone देते हैं dies, ना। all his तो belongings बाप are कहता है given to मैं भी a करनी घोर। Karnigor, special Brahmin जब कोई priest. मर जाता है ना तो उसके कपड़े आदि कटिया बटिया यूज नहीं करते हैं। वो करनी घोर को उसको When करनी anybody घोर कहते हैं। dies, सब लोग their थोड़ी cord, देते हैं। वो bed, लेने वाले करनी घोर होते हैं। तो all बाबा that कहता है the मैं भी person करनी has घोर हूँ। used will be तुम मर given गए to तुमने सब कुछ Karnigor, मेरे को दे दिया। special Brahmin अभी जो नहीं priest. मरे हुए होंगे वो थोड़ी देंगे। And जो the one मर who गए are उसके ऊपर alive, बलि चढ़ they गई don't उन्होंने give सब कुछ anything दे दिया to उसको। the special Brahmin priest. तुम्हारे पास है क्या? पुराना ककपन। The father says, I too सब am दान करते हो। Karnigor. Everything you have is बाप पर like an बलिहार old जाते straw, हैं। and you donate all of that. काम तो फिर भी You तुम्हारे surrender तुम्हारे yourselves लिए to the आता है। Father. तुम It जो is भी then कुछ used देते for हो you anyway. कणा दाना जो भी पुराना पर तुम्हारे ही काम में आता है। Baba मेरे क्या doesn't build काम में any आएगा? buildings for himself. बाबा तो मकान आदि भी अपने लिए नहीं Baba बनाता। doesn't build any buildings for शिव बाबा himself. तो दाता है। Shiv Baba is the bestower. सारे स्वर्ग की राजाई तुमको दे देता He है। gives सारे you the स्वर्ग की kingdom of the राजाई whole of तुमको कुछ heaven. नहीं रखता। इसीलिए इसको सौदागर भी And कहते this हैं। is देखो why he is सोना also कितना called the अच्छा businessman. तुम्हारे से ककपन लेता है और तुम्हें स्वर्ग की बादशाही दे देता है। He gives you the kingdom of heaven. कोई सौदा He करता takes उसके all साथ। rubbish from you. इतनी मीठी मीठी बातें हैं। These are such sweet things. इम्तिहान पूरा होने वाला है। The examinations are now going to end. बाबा देखो अभी बच्चे कैसे हैं। अभी इतना पढ़ाता है इतना प्यार करता है उसका Baba is loving your children so much. Baba gives everything in return. Baba gives the kingdom for 21 births. Then what the children would say? Baba, when will the examinations finally end? मरने पर आएंगे तभी पूरी होगी। Baba says, when you are about to die and the knowledge comes to an end. तुम उसको हैरान कर रहे हैं। एकदम पढ़ा रहा है तुम्हारे को मुफ्त में पढ़ा। Baba says, I am teaching you free of cost. मरने पर आएगा तभी And even then you are asking me, when will the examination finally end? होगा तब ये विनाश When you are about to die and the knowledge comes to an end, destruction will begin. And you will then have a golden spoon in mouth. जन्म लेगे और गोल्डन स्पून तुमको मिलेगा। You will take birth and receive a golden spoon. गोल्डन के Not only golden spoon, but you will get a golden palace. उसका फल मिल जाता है। तुम
तुम्हारा तो भविष्य के लिए है, तो तुम्हारे को Here टाइम ज़्यादा people खर्च study for करना 30 or 40 years, and so they receive the fruit of that here. Your fruit is in the future. You will become princess in the future births you receive. एक तरफ पढ़ाई पूरी हो गई, Therefore, the examination will end when destruction begins. बाकी रिहर्सल तो होती रहेगी। तुमको इस पढ़ाई का फल On the नहीं one मिलेगा। hand, the study will end, and on the other hand, destruction will begin. आत्मा, शरीर और राजा सब नया मिलेगा। Nevertheless, ये बड़ी rehearsals will continue to take place. You are to receive the fruit of this study in the new world. जब तक जीना है तब तक Their souls, bodies, and the kingdom are all new. These are matters of deep dharana. You should never stop studying. You're all the ones who will study, isn't it? You have to pay attention while studying. The Father sits here and explains these wonderful things. आने वाले भी झट योग और ज्ञान में लग जाते Those who come late also quickly busy पर कितनी themselves in studying knowledge and yoga. देरी से माना क्लास में देरी से नहीं, Not coming to the class very late. Those who come late also quickly busy themselves in studying knowledge and yoga. टाइम पर देरी से आने वाले भी झट योग और ज्ञान में लग जाते Those who हैं। come late also quickly busy themselves in studying knowledge and yoga. पर मदार हो गया पढ़ाई के ऊपर। And they too can claim a high status. मीठे मीठे Everything depends on the study. Acha. बाप दादा का याद To the sweetest, beloved, long lost, and now found children, love, remembrance, and good morning from the Mother, Father, Bab Dada. The spiritual father says Namaste to the spiritual children. We spiritual children say Namaste and good morning to the spiritual father. मुख्य सार Essence for Dharana. शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए In order to make both you, the soul, and your body pure, पुराने शरीर सहित सब कुछ भूलना, forget everything including that old body. देह सहित बाप पर पूरा बलि चढ़ महादानी Surrender yourself completely with your body and become a complete philanthropist. मान को तोड़ना है। Surrender yourself completely with your body and become a complete philanthropist. बेहद का सुख लेना है। Follow the Father's Srimad उसकी श्रीमत and receive unlimited happiness. ये शुद्ध लोभ रखना है Have a pure greed जिससे सारी विश्व सुखी बने। and renounce impure greed so that the whole world can remain happy. बाकी अशुद्ध लोभ त्याग देना है। Have pure greed and renounce impure greed so that the whole world can remain happy. दान Blessing. अमृत वेले के महत्व को जान, By knowing the importance of Amrit Vela, विशेष सेवाधारी भव, may you be a special server and become great. महान बनने वाले By knowing the importance of Amrit Vela, may you be a special server and become great. अच्छा स्पष्टीकरण, सेवाधारी अर्थात आँख खुले और सदा A server is one who, as soon as he opens his eyes, he experiences himself to be with the Father. सदा बाप के साथ और बाप के साथ A server is one who, as soon as he opens his eyes, he experiences himself to be with the Father and also the stage of being equal to him. तो जो विशेष वरदान के समय को जानते हो और वरदानों का अनुभव करते हैं, Those who know about the time of special blessings and experience those blessings are special servers. और उन वरदानों का अनुभव करते उस समय
उसको ही विशेष Those who सेवा know करनी about the time of special blessings and experience those blessings तो are साधारण special सेवा करनी servers. If you don't experience this, then you are an ordinary जिसे server, अमृत वेले का not a special one. संकल्प का समय का और सेवा का महत्व है Those who give importance to Amrit Vela and to their thoughts, संकल्प time and service, और सेवा का महत्व है those who know ऐसे about the सर्व importance of महत्व को जानने everything वाले ही महान बनते become great. और औरों को भी महत्व And they also make others great by telling them about the importance of everything. महत्व बता करके They themselves become great and they tell the importance of everything and make others great. Slogan: की शक्ति है the greatness of life is the power of truth स्वतः ही झुक to which all souls bow down. आगे सर्व आत्माएं स्वतः ही झुकती है जीवन की महानता In front of the power of truth, all souls will bow down. The greatness of life is the power of truth to which all souls bow down. अव्यक्त क्षण 2 नंबर है कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं 2nd February, तो जल को the point to become avyakt. हाथ में नहीं ऐसी अंचली ले When any promise is made, one keeps water as a witness. तो बाप भी बच्चों से ये जल की लोटी चढ़वाते So the father also makes the children offer this pot of water. जल की लोटी चढ़ाता है देखो चढ़वाता है बच्चों से प्रतिज्ञा The father also makes the children offer this pot of water. क्योंकि क्यू को खत्म करे Make a promise that from today you will finish the queue of why. फलाना क्या हुआ ये क्यों 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 Why this happened, why that happened, why. Make a promise that from today you will finish the queue of why. Because the queue of wasteful thoughts starts with this word why. होगी तो दूसरी तीसरी व्यर्थ संकल्पों की लिंक लग जाएगी There will be the link of waste and negative thoughts when you use the word why. Imagination gets to begin with the word why. हो जाएगा So when this word why ends, एक रस स्थिति then you will be able to remain stable on the destiny of the drama. करेंगे तभी ड्रामा की भावी जो है उसके ऊपर एक रस और स्थिरम रहेगी जो When this word why ends, then you will be able to remain stable on the destiny of the drama. नहीं करेंगे Then you will not say why and how. अच्छा आज का स्वमान है Today's self-respect. मैं ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 आत्मा I am the number one soul equal to Father Brahma. नंबर 1 की दृष्टि से ही देखते हैं। Baba looks at you children with a vision of becoming number one. स्वयं को So what you need to churn? How to make oneself number one. बनेंगे उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा It isn't that only by understanding you will become, you have to make effort as well. नंबर 1 आत्मा की क्या निशानी What would be the signs of number one soul? नंबर 1 आत्मा जो है उसकी कौन कौन सी निशानियाँ होंगी What would be the signs of number one soul? Look at Father Brahma. मैं देह While in में yoga विराजमान practice, मैं दूसरों को न देख सदा बाप दादा I am a soul seated in this body. हमें अनेक जन्मों की Instead of looking at others, I am always looking at Bap Dada. मैं दूसरों को न देख सदा बाप दादा Instead of looking at others, I am always looking at Bap Dada. मैं आत्मा नंबर 1 I, the soul, am becoming number one with his light and might. And I am always busy in giving to all. बनती हूँ I, the soul, am becoming number one with his light and might. And I am always busy in giving to all. चलेगा कहाँ से
खाली मन शैतान का घर कहा जाता है ना, इसीलिए बाबा बिजी कर Empty mind is devil's workshop, and therefore सारे विश्व we have to take light and might from Baba and give it to the whole world. ओम शांति। Om Shanti. आज हम सभी अपने दिलाराम बाप दादा से अव्यक्त मिलन मनाते। Today we all will celebrate the Avyakt meeting with Avyakt Bab Dada. स्वयं को वरदानों से भरपूर We will have our Avyakt stage. We will fill ourselves करें। आज सारा दिन with the treasures that Baba gives us. हम स्वयं की मनसा स्थिति And therefore we will check our mental stage throughout the day. साइलेंस We will have रखते हुए ऐसा महसूस करें। double silence. हम वतन से फरिश्ते We, the angels from the subtle region, are here in Shantivan, and we have been incarnated here. And whilst moving and walking around, करें। फरिश्ते be an angel and make one another experience to be an angel. Remain double light, आवाज में नहीं आते, never come into sound, ही कारोबार में आते हैं। and only when it is necessary, you will come in sound. तो फरिश्ता स्वयं को अनुभव You करें। will experience yourself to be the Avyakt angel. और उसके साथ साथ आज कोई भी शांतिवन के कैंपस से बाहर Today nobody will be going outside for shopping. भोजन पर No one will go outside the campus of Shantivan. नाश्ते चलते While walking and moving around in Shantivan, करेंगे। you will experience yourself in the angelic stage. साइलेंस की शक्ति को यूज करेंगे। You will use the power of silence. क्या होती है आज सारे दिन भर की दिनचर्या You will experience yourself to remain introverted. 10 to 10:30 meditation. आदरणीय ब्रिज 10:30 to 11:30, respected Brother Brij Mohan will give a class. गुण संपन्न स्थिति 11:30 से 12:30 करुणा भाई का क्लास रहेगा। And after that, Brother Karuna will give class. एवर रेडी। क्लास के तुरंत बाद आप सभी हॉल से प्रस्थान करें। Instantly after the class, सफाई की जाए और you will all go outside the class so that there will be seating arrangements for the evening hours. 3:30 बजे आप सभी And at 3:30 p.m., you will all enter the Diamond Hall. कोई भी गैलरीज में बाहर पैसेज में क्यू लगाकर खड़ा ना हो। And you will not stand in queue outside the passage. स्थान बैठने में मदद The करेंगे। Sevadaris will help you to give your place. आजकल चेयर्स पर स्लिप्स नहीं लगाए Nowadays, no names will be written on the chairs. बहन है There are very few brothers and sisters. Only their slips will be नहीं करे। put. सेवाधारी आप सभी को And Sevadaris will definitely बैठने का अवश्य सहयोग दें। make arrangements 4 से 5 to make you sit. 5 से 6 4 to 5 meditation. 5 to 6 Brother Suraj will give class. अनुभव 6 से 6:15 योग रहेगा। 6 to 6:15 p.m. there will be meditation. दादा को At 6:15 p.m. कराएंगी। Sister Shashi will offer bhog to Baba. 8 बजे तक अव्यक्त बाप And at 6:30 p.m. to 8 we will listen to Avyakt Bab Dada's sweet version through the video. मधुरवाणी का And after that there will be Madhurvani group song. मोहिनी दादी जी के And after that Dadi Rathan Mohini will speak the words of blessings. ब्रिजमोहन भाई साहब की And then we will be having the pure inspirations from Brother Brij Mohan. टोली भी दी
जाएगी। You will also be given जो ये toli. खा करके उसके प्लास्टिक बैग्स कृपया You will not throw the empty packet in the hall. बाहर डस्टबिन्स हैं, There are dustbins outside. You will use the हॉल के dustbin. सेवाधारी और अन्य युवा भाई बहन The जो Sevadaris of the hall and all those other Kumars will give cooperation after the program gets over at night at 8 p.m. का योग व्यवस्थित Everybody will make the seating arrangements once again for tomorrow's class. बैठे हैं वहाँ ही 5-5 की थप्पी लगा करके रखेंगे। मुरली के बीच में प्लीज विशेष अनुरोध है, कोई भी तालियां नहीं In between Avyag Babdada's portion, we will not clap hands. हॉल के जो भी सेवाधारी हैं सब यहाँ ही रहेंगे, कोई भी All the Sevadaris of the hall will remain seated here. डायरेक्शंस They will be given special directions तारीख को आबू दर्शन के on 3rd and 4th. Those will be going to sightseeing. अपनी बुकिंग आबू दर्शन They will be having their booking, अपने व्हीकल से जाना चाहते and those who want to go by their private vehicle 9 से 10 के बीच अपनी भोजन between 9 a.m. to 10 a.m. they have to give the receipt of their journey food. और विशेष आज बिजनेस विंग की मीटिंग And today especially ट्रेनिंग सेंटर the business wing meeting will be in training center hall number 4. तो जो भी उसमें रुचि रखते हैं अनुरोध है 9:30 बजे वहाँ पहुँचेंगे। ओम शांति। अभी हम सभी बाप दादा को भोग स्वीकार कराएंगे। Now we will offer bhog to Baba. एक सूचना बहनों की तरफ से गेट नंबर 3 से डबल विदेशी भाई प्रवेश करेंगे और 5 नंबर गेट से टीचर्स बहनें, 7 नंबर के बाद के सभी गेट्स खुले रहेंगे जहां से माताएं प्रवेश करेंगी। भाइयों की तरफ से गेट नंबर 3 खुला होगा जहां से कुछ मुख्य भाई प्रवेश करेंगे और उसके पश्चात 7 नंबर से सभी गेट्स खुले रहेंगे भाइयों के लिए। ओम शांति।
जा बाबा के सच्ची लगन से, बन जा बाबा के तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का
संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। सभी भाई बहनों से अनुरोध है, बाबा का संदेश सुन करके ही आप सभी नाश्ते पर जाएंगे, तब तक अभी नाश्ता भी आप सभी को नहीं मिलेगा। It is a request from everyone that you will listen to Baba's इसलिए आप trance सभी अपने message. अपने स्थान पर बैठे रहे। Everybody please be seated in your places. प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। I reach the subtle region to offer bhog to beloved Baba. जाने के साथ As I went today, विशेष महाराष्ट्र के भाई बहने और भी अन्य जगह के भाई बहने सभी को याद बाबा को जाकर के दी। as I went today, I gave the love and remembrance of all the brothers and sisters who have come from Maharashtra to Baba. सदगुरुवार का भी दिन है। Today is the day of Sadguruvar. विशेष बाप का बच्चों के साथ
मिलन मनाने का भी दिन है। And today is also the day of meeting the souls and the Supreme Soul. दुनिया में तो गंगा स्नान पानी के सागर में In the world outside, डुबकी लगाने के लिए they take a dip in the Ganges साल में Ocean एक बार 2 बार yearly once or नदी या गंगा twice. सागर They go to the सागर के कंठे Ganges shore पर बाबा ने कहा and they यह take the dip there. महासागर है। Baba says, फिर बाबा this is the great ocean. And in between, Baba started saying, Maharashtra means what? कि विशेष महाराष्ट्र है ही। बाबा ने कहा महारास करने वाले, Maharashtra means the one who will have great dance. तीसरी बात कौन सी? One who will have great dance. मैंने बोला बाबा आपका रास सुनाने का आप ही I said, Baba, you only explain what does it mean. Maharashtra means having a great dance, staying with a great intoxication. अच्छी तरह से रहते हैं ना, Just as the इसको माँ ठाट कहते हैं। royal people remain with a great intoxication, wearing their great costumes. So in this way, Baba said that Baba was looking at the specialities of the children. बाबा का घर ऐसा सागर का कंठा है And therefore, Baba's जहाँ home पर is a great shore where 5 मास 6 months, 2 बार 5 months, or monthly twice or thrice, बाबा के बच्चे Baba's children महासागर में डुबकी लगाने के लिए come here to take the dip in the great ocean, and they continue to reach here. भरपूर होकर के जाते हैं। They become full from Baba's home and then leave. जो संगम पर बाप ने रचा है And this is a great ocean मनाने का, that Baba has created at the confluence age. There is this great meeting, बाबा देख करके बहुत and Baba said that Baba becomes very happy seeing to it बाप ने ऐसा यज्ञ रचा दिया है that truly Shiv Baba has created such a big sacrificial fire बाप के साथ that the children मिलन मना सके। very easily can have the meeting with the father. को बेहद खुशी होती है। Looking at this, तो बाबा ने कहा the father is greatly pleased. करने वाले माँ Baba said that Maharashtra means the one who have great dance. विशेष बच्चों को बाबा ने कहा आज विशेष डबल याद प्यार बच्चों को And so Baba said, go and give special love and remembrance to my children, and especially those who have come for the first time to Baba's home. तो मिलते ही हैं पर बाबा ने Everybody will meet the Sadguru, मिलन मनाने का भी आज विशेष दिन है। but today is the special day of meeting Avyakt Bab Dada. जो याद है, जो प्यार है, In the Brahmin children's remembrance and love is reaching the Father subtly, and therefore there is a double बाबा ऐसे benefit because it is the double day. बाबा ने कहा कि मेरे सभी बच्चे बड़े स्नेही सहयोगी तो हैं। Baba with a lot of love was having smile on his face. बच्चों का भी सहयोग Baba said, you children give your cooperation to the Father. बाबा ने The Father also gave his cooperation to the children. Children receive Father's cooperation, and this is also the fortune of you children. तो बाबा ने भोग की थाली की I had kept the book plate in front of Baba. बाबा को विशेष Baba gave a drishti to the book plate, याद दी
I also gave the love and विशेष आज remembrance सुभाष भाई of जो बाहर many से souls. थे, महाराष्ट्र के थे, उनकी भी विशेष याद दी। Brother Subhash was of Gyan Sarovar. He left his mortal coil recently. विशेष Baba also emerged him. भोग लेकर के गई। I had taken Bhog plate with me. संगम का समय विशेष बच्चों का भाग्य बन जाता है। Baba said at the confluence age, it becomes the fortune of the children भोग स्वीकार कराते that the children feed Bhog to Baba पर बाबा तो सूक्ष्म every day, समय के अनुसार but in the subtle region and according to the day, खर्च करते हैं। Baba also emerges his children in the subtle region बच्चों को इमर्ज करते विशेष प्यारे बाबा के घर का भोग स्वीकार कराते हैं। and also feeds a Bhog of Baba's home. भोग था, बाबा ने बड़े प्यार से उन्हें भोग स्वीकार कराया। Baba fed Bhog with lot of love to all those souls. सुभाष भाई की भी याद दिया। I also gave remembrance of brother Subhash. मैं याद प्यार दिया। In advance, I gave love and remembrance of everyone. टीचर्स बहनों की भी याद थी। बाबा ने कहा ये भी मेरे I also gave the love and remembrance of the teachers. बहनें Baba said, these are my equals. याद प्यार लेते सभी I took everyone's love and remembrance and gave to Baba. I took Baba's love and remembrance for all and came down. Om Shanti.